Hello everyone, welcome to Social Locus. Today we have an interesting video lined up for you, so please do look forward to it. Unfortunately, we had a mishap at the studio and the primary recording for this video was lost. Fortunately, we do have a secondary recording, but the quality of the secondary recording is not really up to the mark. We are still publishing this video because we at Social Locus realize the importance of the topic that is being discussed. So let's move on to the video now. Hi everyone, thank you so much for joining us today and welcome to Social Locus. So I'm extremely honored to introduce my guest today. We have Miss Simmi Nanda with us. Ma'am was someone I saw on Shark Tank, and at that time I did not know who you were, but later on when I saw your Instagram page, I got to know about what work you're doing. That's how I got to know about your whole journey, and also, of course, through a mutual person. So, before we begin with today's conversation, and it's going to be a very interesting conversation, I would request you to please introduce yourself for the audience who are not aware of what you're doing. So, if you may please share something with us. Hello everyone, so I'm Simmi. I'm co-founder of BeUnic. I'm a law graduate and I have been an entrepreneur right from the beginning. We had our own dental and medical business, which I ran for almost 18 years in Nagpur. But then I shifted to Noida and we started this journey with my sons, both my sons, Ashish and Vishesh, in 2019. So we made a platform for the queer community to market their products on our website. This is how BeUnic started. Alright, thank you so much, ma'am. I would like to begin by sharing a little story with you, and I think you will be able to relate to it a lot. I think about 2 years ago, I was writing a paper on sexual and mental health of lesbians. And while I was doing my research for that paper, I thought that, I should just have some daily conversations with people I meet about the topic and observe what are their reactions and what do they say about it, without really telling them that what are my intentions. So while doing that process, I showed one of the elder people, a person, like mutual person, and said that this person just came out very recently on Instagram, and this person came out as a bisexual being. And the initial reaction was, ये क्या होता है? क्योंकि gays and lesbians तो हमने सुना है कि bisexual क्या होता है. So after explaining, I waited for some time, but the response was silence. There was no response from the other end. And when I insisted that, what do you think? What are you thinking? So the response was that, this whole thing that this boy is doing, this will create so much problem for his parents. क्योंकि बच्चे तो कर लेते हैं सब कुछ, बट फिर मम्मी पापा को सुनना पड़ता है, एंड they must have so many plans. They have planned his future, his wedding, his education. Now what will happen to all of that? The society is going to say so much. It's not going to be an easy journey for them. And I had a conversation. I tried explaining that it's the times are changing. This is not a hidden reality anymore. It's out in the open, and you're not in the 1970s where we come. When the movement started in San Francisco, we are now in India, and over here also it's become a reality now. But no way was I able to change the perspective of this person. So my question to you, would be that how did you think of starting this business? Because it's one thing to know about it, and it's one thing to do something about it full time. Like, you're completely invested in this. So what motivated you to work for the queer community? So as you narrated your story, I also have my background. I'll just give a brief of it. 2019, Ashish came to Noida. He was at that time he was doing his MBA. So it was a family get together, and we were just sitting together, and we said कि चलो dance करते हैं. And for the first time, I saw him, Ashish, dancing to the tunes of Madhuri Dixit's song. And it was a very feminine moves. I was in a very
awkward situation looking at my son making a feminine moves at that time. So my sister and my niece were also sitting there, and they got some idea that, I've got something now, some doubt is there. And the very next day they called me to their home, and my niece broke the news, Masi, Ashish is gay. And I started crying, and what is this? Ye kya hota hai? I never knew what is the full form of LGBTQ. LGBTQ क्या होता है मुझे कुछ पता नहीं था उस टाइम पे. And I had lots of misconceptions and myths in my brain कि ये पता नहीं कैसी कम्युनिटी होगी, and हमारे बीच में बहुत स्ट्रेस बढ़ गया. हाँ, between you and your son. हाँ, वो कुछ दिखाता था, वो सब चीजें अपनी सोशल मीडिया पे डाल देता था जो मुझे डर लगता था. मुझे ऐसा लगता था कि भाई मेरे रिलेटिव्स तो सारे कनेक्टेड हैं मेरे साथ, तो मैंने उसको ब्लॉक कर दिया. मैंने 6 महीने उससे बात नहीं की. ओके. हमने बिल्कुल बात नहीं की, ओनली ऑन दिस ग्राउंड की मैं बोलती थी कि तू ये नहीं करेगा, और वो बोलता था कि नहीं मम्मा मैं तो ये जरूर करूंगी. तो प्राइड परेड्स की जितनी पिक्चर्स थी, अपनी पर्सनल पिक्चर्स थी, वो सारी सोशल मीडिया पे डाल देता था. उसके बाद उसके फ्रेंड्स ने मुझे अप्रोच किया कि आंटी आशीष को आपकी जरूरत है, आप उससे बात करिए. एंड धीरे धीरे ग्रेजुअली आई केम टू नो एंड आई एक्सेप्टेड हिज सेक्सुअलिटी. बट कहीं कहीं ऐसा लगता था बैक ऑफ द माइंड कि नहीं, ये कभी ना कभी नॉर्मल जरूर हो जाएगा. तो मेरा बड़ा बेटा मुझे हमेशा समझाता था कि मम्मा ही इज एब्सोल्युटली नॉर्मल, आपको उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है. तो मुझे लेकिन ऐसा लगता था कि नहीं, ये नॉर्मल हो जाएगा. एंड माई मॉम वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ गेटिंग माई सन्स मैरिड. तो वो उसके पीछे पड़े रहते थे, सिम्मी शादी करवा दे, इनकी बड़े की शादी करवा, छोटे की शादी करवा. अब उनको क्या बोलूं मैं. सो धीरे धीरे मैंने बहुत सारी चीजों को अनलर्न किया, एंड देन आई लर्न मेनी न्यू थिंग्स ड्यूरिंग माई प्रोसेस एंड एक्सेप्टेड हिज सेक्सुअलिटी. बट जब 2019-20 में वो उसने मुझे बोला कि मामा मुझे ना अपनी ड्रैग परफॉर्मेंस के लिए शूज चाहिए, सो दैट इज हील्स, यूनिसेक्स शूज विद हील्स. वहां से मुझे एक आइडिया आया. मैंने बोला दिस इज अ वेरी नीश कैटेगरी. क्योंकि रेगुलर मेंस शूज तो इट्स फ्लडेड, हम तो कहीं स्टैंड भी नहीं कर पाएंगे. बट दिस इज अ वेरी डिफरेंट थिंग जहाँ पे रेनबो शूज एंड विद हील्स फॉर मेन. So it was it was a unisex shoes. Anybody could wear that. And we started working on it, and we started this idea. वहाँ से आइडिया डेवलप करते करते हमें आई थिंक 1.5 साल हुआ. And then we saw a lot of queer entrepreneurs selling from their Instagram. पर्सनल Instagram से, और उनके पास में ऐसे कोई रिसोर्सेज नहीं थे जिससे कि वो सेल कर सके. And they were just putting up their stalls and selling from there. फिर वहां से आइडिया आया कि why don't we become a marketplace, and we invite queer entrepreneurs on our platform to sell their products. Okay. And this is how we started working on BeUnic. So BeUnic is establishment हमारी 2019 में हुई. Actually, you said a very beautiful thing, which is that this is not normal. अंदर ही अंदर वो था कि मैं चलो इसको थोड़ा सा एक्सेप्ट कर लेती हूँ, बट क्या पता प्यार से फ्यूचर में ठीक हो जाए. बट दिस इज ऑल्सो वी हर्ड दिस टर्म अ लॉट ड्यूरिंग पैंडेमिक व्हेन अ लॉट ऑफ द यंगस्टर्स वर कमिंग आउट ऑन सोशल मीडिया शेयरिंग दैट दे हैव मेंटल हेल्थ इश्यूज. और वो एकदम से वो नॉर्मल वर्ड की व्हाट इज नॉर्मल, वो एक बहुत फेमस हो गया था उस वक्त पे. सो sexuality is something that even today parents are not comfortable talking about, and it is somewhere I feel there is this inherent barrier. हम बच्चे भी बोलने में शर्माते हैं और पेरेंट्स भी पूछने में शर्माते हैं कि and suddenly after you're married you are just expected that okay you will know everything. But when it comes to a person openly accepting their sexuality on a public platform, that is when you know that this is something that not just me but everybody is getting to hear. So I would like you to ask, if you're comfortable sharing, what was your journey of transforming your thought process? Because it's not easy to go from that stage of crying to now accepting it so openly that it's almost you're on a national platform for so
what did you do to change your mindset? So as I told you, it was very traumatic initially to get to know about this LGBTQ, and I'm talking about 2016-17 when we were not even aware of things. Now things have very much changed. I was single. I was that time I was going through divorce also. Okay. So I had no partner. I had nobody to counsel me, nobody to tell me कि ये क्या होता है. You know, जब तुम्हारे पास में support system होता है, you go to that support system, you have so many questions, you have queries कि ये क्या है ये. Since I did not have any support system, we went to a psychologist. तो साइकोलॉजिस्ट ने हमें क्या बोला, इमेजिन आई एम टॉकिंग अबाउट 2016, योर सन इज मैडम इन बिटवीन दिस स्केल, इन द मिडल ऑफ द स्केल. If he wants, he can become full straight person, and if he wants, he can become full gay also. अब coming from a specialist, एक मदर क्या करेगी? बस मैं अपने बेटे के पीछे पड़ गई कि नहीं, तुमको नॉर्मल बनना ही बनना है, उस तरफ जाना है, उस तरफ, हाँ, तुमको स्ट्रेट की तरफ जाना ही जाना है और ये होगा. Because it was some psychologist which has given me this information. But over a period of time, जैसे मैंने बताया, बहुत सारे हमारे struggles रहे, हमारा communications बिल्कुल बंद हो गया, and धीरे धीरे मेरे बड़े बेटे ने मुझे काफी YouTubes के links भेजे, articles भेजे to make me understand that this is normal. तो मैंने वो सबको पढ़ा. So there is a lot of unlearning and new learnings during this process. So जब तक हम unlearning नहीं करेंगे, new learning नहीं होगी. So that is one thing which I did. मतलब इतने articles, इतना कुछ पढ़ा है मैंने अभी तक के. लेकिन जब learning और unlearning के बीच में भी back of the mind में तुम्हारे रहता है कि हाँ यार, कभी ना कभी तो शायद ठीक हो सकता है. एक उम्मीद रहती है पेरेंट की कि नहीं, मुझे इसकी शादी करनी है, कहीं ना कहीं तो कभी ना कभी होगा ये. हालांकि सब कर लिया मैंने, देख भी लिया और सुन भी लिया, YouTube भी देख लिए, but back of the mind was still there. Yeah. So what happened is I had joined a public speaking course at that time. तो वो 6 महीने का कोर्स था. 6 महीने के बाद में हमें एक स्पीच को फाइनली प्रेजेंट करना था. And I was already undergoing a lot of depression and lot of things happening. तो मैंने वो तैयारी की. And intentionally I chose the topic coming out of the closet. तो मेरे मेंटर ने मुझे बताया था कि सिमी, ऐसा कोई टॉपिक चूज करो जो तुम्हारे दिल के बहुत पास हो. इससे तुम मतलब इट शुड कम नेचुरली. तुम्हें रट्टा लगाने की और याद करने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी. तो आई टुक दैट टॉपिक एंड आई स्टार्टेड प्रिपेयरिंग द स्पीच. एंड मैंने अपने बेटे को भी नहीं बताया कि मैं क्या कर रही हूँ. और जिस दिन स्पीच देनी थी, मुझे डर लग रहा था अंदर ही अंदर कि मैं नहीं दे पाऊंगी और मैं सब भूल जाऊंगी स्टेज पे जाके, बिकॉज दैट वाज द स्टेज फियर. और दूसरे फियर तो ऑलरेडी बहुत सारे थे और ये टॉपिक भी बड़ा वो था. तो मुझे लगा मेरा वहां गड़बड़ हो जाएगा और मैं भूल जाऊंगी. और वो हुआ. जैसे ही मैंने अपनी स्पीच स्टार्ट की, आई ब्रोक डाउन. मुझसे रुका नहीं गया. एंड सबने बोला कि नहीं ठीक है, अगर नहीं करना चाहते तो छोड़ दीजिए, कोई और नेक्स्ट कैंडिडेट को ले लेते हैं. बट माई मेंटर इंसिस्टेड कि नहीं, सिमी करेगी, लेट हर डू दैट. फिर मैंने पानी पिया एंड देन आई अगेन स्टार्टेड प्रेजेंटिंग. एंड दैट डे फॉर द फर्स्ट टाइम आई स्पोक इन फ्रंट ऑफ द पब्लिक, लव देम, हग देम एंड किस देम, बिकॉज क्लोजेट इज नॉट द प्लेस टू बी इन. That was the line and that was the point in my life which changed my life. I sensitized myself completely. फिर उसके बाद I was never going back. I never told आशीष कि you are not normal. हमारी कभी उस बात पे कभी कोई डिस्कशन नहीं हुई. Because अब मुझे समझ में आ गई कि yes, he is absolutely normal. And now I have to change my mindset, not him. Yeah. So Actually, this is a very good point that you told him that no, you are fine, because this is something I have also realized with age, that no matter how many tussle you have with your parents, no matter how much I disagree with them, but on any given topic, if my parents don't agree with me, वो कहीं ना कहीं back of the mind में ना वो रहता है कि नहीं, मम्मी पापा is not happy or they are not okay with it. And the moment you get that green flag from them,
that we are with you, you're fine. It immediately fills your life with so much confidence. Yes, because absolutely. friends हो, टीचर्स हो, मेंटर्स हो, गुड, बट वो जो प्राइमरी सोर्स ऑफ मोटिवेशन है ना वो घर से ही आता है. एंड इन एनी लाइक आई वाज आल्सो गोइंग थ्रू वेरी टफ टाइम some time back when things were not working out with my career, personal life also not very happy, and at that point I was crying because I got rejected from this university where I was applying for my PhD, and I was just like, oh, my life has come to an end. I've prepared all my life for this opportunity. अब वो चला गया हाथ से. And at 12 o'clock I was crying, and then my father sat me down and he said that you have not failed. Because I am with you. Mm-hmm. Until I am alive, I will not let you fail. And that was the moment when इतना वो मोटिवेशन पढ़ के कुछ नहीं है, वो एक मोमेंट में सारा कॉन्फिडेंस आ गया. So I can imagine your supporting him would have just made the whole difference for him to have so much confidence now. I also would like to appreciate that your Instagram handle is extremely vibrant, and I love the company's page because it's so addictive also. I started watching one post और वो एक के बाद एक आपका मन करता है आप सुनते ही जाओ, because a lot of people are also speaking. There are videos of some parade and you just keep watching people having so much fun, and it's genuine happiness when you watch, because वो दिख जाता है कौन सा वो फेक वाला है कि सिर्फ आप शूट कर रहे हो और कौन सा सच्ची में वो है. So now that you meet a lot of people from the community, I saw you're part of one of the parades also. How is your experience with them, with also regard to your company also, that what is the response now from the people around? Because as you said 2016 से अब तक काफी चेंजेस भी आए हैं. लीगली ऑल्सो वो पहले आया आर्टिकल, फिर हट गया, फिर वापस आ गया. काफी उसमें अभी चर्चा चल रही है कि वो लीगली गे मैरिजेस अलाउड होंगे नहीं होंगे. बीच में हो भी गया था, अब फिर हट गया. सो आई एम श्योर देयर इज अ लॉट ऑफ कॉन्वर्सेशन दैट इज हैपनिंग. सो व्हाट इज योर एक्सपीरियंस विद द पीपल फ्रॉम द कम्युनिटी अपार्ट फ्रॉम योर फैमिली? So last year April, my elder son, he wanted, actually this basic idea of BeUnic is to build the community. Shark Tank में हमें उन्होंने बोला पीयूष बंसल ने कि आप सीधा D2C ब्रांड बन जाओ, मेरे साथ चश्मे बनाओ, मॉडल ही चेंज कर दो. We refused because the idea is to build this community, not to become just another D2C brand. जब हमें बिल्डिंग करनी है तो हमें हर जो भी हमारे क्रिएटर्स हैं उनकी लाइफ वो मेरे साथ इतने कनेक्टेड हो गए कि जो चीजें वो अपने पेरेंट्स के साथ शेयर नहीं करते वो मेरे साथ करते हैं. सो आई फील सो हैप्पी अबाउट इट कि देखो किसी ने ट्रस्ट किया है मेरे ऊपर में. ऑन द बेसिस ऑफ दैट ट्रस्ट आई डेवलप्ड सो गुड रिलेशंस. एंड नाउ दिस व्हाट्सएप कम्युनिटी जिसमें वी हैव ऑलमोस्ट 1200-1300 पीपल ऑल ओवर इंडिया. So queer community है पूरी, and there are a lot of conversations happening there. तो वहाँ से हमें और ideas भी आते हैं और हमें पता चलता है कि what are the struggles they are going through, what are the things which we need to do something about it, because a lot of people are struggling with their identities, parents, children. और दूसरी तरफ है हमारा ये रेनबो पेरेंट्स. अच्छा, हाँ, so we are all parents pan India. हमारे बच्चे queer हैं. Okay. तो वहाँ की स्टोरीज अलग चल रही हैं, बच्चों की स्टोरीज अलग चल रही है. सो वी आर पार्ट ऑफ बोथ दीज ग्रुप्स. तो हमें बहुत सारी कॉन्वर्सेशंस रोज डेली बेसिस पे मिलती हैं. सो इतना मतलब आई हैव इवॉल्व्ड एज अ पर्सन लुकिंग एट दीज स्टोरीज. सो आई थिंक कि मुझे ऐसा लगता है कि जहां कहीं मैं कंट्रीब्यूट कर सकती हूँ किसी की भी लाइफ में, इवन इफ इट इज 1% of the people or anybody, अगर मैं कुछ 1% भी contribute कर सकती हूँ, किसी को help कर सकती हूँ, I would love to do that. So I get connected with the person जो भी share करते हैं, personally उनसे बात करती हूँ, क्या problems हैं, हम कैसे help कर सकते हैं. So it has really changed my personality also over a period of time. अब मेरा perspective बिल्कुल बदल चुका है.
इस कम्युनिटी को लेके। Definitely. So, how is your company over the years? आपने जैसे बोला 2020 में आपने start 19 में आपने start किया, and from there to now, how is your company's service and products helping the people from the community? Because I'm sure they also share feedback with you that what is it that is making a difference for them. So, if you would like to just share with the audience. Yeah, so basically हमारे जितने भी products हैं, they are very vibrant colors because normally rainbow colors और bright colors किसी भी website पे कम ही मिलते हैं. तो market में भी जाओगे online offline तुमको regular colors ज़्यादा मिलेंगे. You don't get normally these kind of colors. So we have got some very good collection of queer community making these rainbow candles. That is the best thing. जिसमें आपको 7 layers of rainbow colors मिलेंगे and it's a candle and it's a scented candle. Yeah. The whole night you can burn that candle. तो इतने innovative और इतने अच्छे products हैं and we are helping those people जो सिर्फ एक छोटे से कमरे के अंदर में बना रहे हैं. We are helping their products to reach to US. US, UK, कनाडा, हमारे बहुत सारे ऑर्डर्स वहां से आते हैं. तो वो उन लोगों को इस चीज में हेल्प मिलती है बिकॉज उनको रीच मिल रही है, उनको मार्केटिंग हो रही है उनकी. सो और एक स्पेशल कनेक्ट भी है मेरा सबके साथ में. तो इसलिए दिस इज हाउ वी आर ट्राइंग टू हेल्प द कम्युनिटी रीचिंग आउट their products to all over India. It's sort of empowering them Yes, also. yes, it That is you empowering. can also go ahead and do so much in your life. Yes, yes. आपके personal account में देखा था that you have met Sushant. He, for the first time when I saw Sushant, it was when him being a part of Big Boss season 7. And at that time, from there to watching his journey now, I've always been somebody who's very active on social media. So I keep a track on what's happening, what are people posting, because as a sociologist, these are areas of my interest. And wherever I see a opportunity that this is a topic which is very relevant, I like to find out more. And Sushant is somebody who recently got a very big opportunity in a Bollywood movie. A proper song and segment dance was, provided. And this is a very revolutionary moment because earlier we used to see that mainstream actors would only dress up like drag queens and other female characters. Nobody from the community was invited to be a part of the bigger screen, a bigger mainstream platform. So, two questions. One, how was the experience of meeting? And the second is, what is your vision for the community's future? Because as a person who is related to so many people, what is the aim? What is the vision that, where do you want to see these people going ahead in life? So I met Sushant in Gurgaon. There was an event and I met him for the first time there. Although I have been hearing a lot about him from my son Ashish कि वो ये भी कर रहा है और मैं भी देखती रहती हूँ. I also follow him. He's doing so many things now and the way he has transitioned from one stage to another. Although I have not seen the past, I have only seen this one because मुझे recently मैंने उसको follow करना शुरू किया and आशीष ने जब मुझे बताया जब ये movie आई especially. So it has been an amazing journey with him also. I mean, it must have been a very difficult initially. And Sushant के parents are also a part of Rainbow. Okay. So उधर से भी पता चलता है कि उनके parents ने I think they are they started this group, Sweekar Parents Group. So that was a very nice experience. Meeting him तो बड़ा अच्छा लगा उनसे बात करके. एंड विजन हमारा BeUnic का इस टाइम पे यही है कि जब हम लोगों ने ये किया था ई-कॉमर्स शुरू किया था उसके बाद हमें कॉर्पोरेट्स ने हमें ये बोला कि हमको हायरिंग भी करनी है. सो वी आर नाउ प्रोवाइडिंग कैंडिडेट्स जो भी कैंडिडेट जिनको चाहिए कोई कम्युनिटी के वी आर ट्राइंग टू प्लेस देम टू द कॉर्पोरेट्स. And we do upskilling. So the main objective is to make them financially independent.
जब तक पैसा हाथ में आएगा ना, ये सारी बातें अपने आप बंद हो जाएंगी, बिकॉज कोई भी उस स्टेटस पे पहुंचेगा। आज सुशांत को कोई क्यों नहीं बोल सकता, बिकॉज ही हैज रीच्ड दैट लेवल कि वहां पे उसे कोई हाथ नहीं, उंगली नहीं उठाएगा, कोई उसके बारे में कुछ बोलेगा नहीं। इट वाज ऑल गुड थिंग्स व्हिच वी से, बट वो कभी तभी आएगा जब उसके पास में पैसा होगा। सो मेन चीज ये है कि इनको फाइनेंशियली एक इंडिपेंडेंट बना के उनको एक ऐसे लेवल पे लेके आ जाए कि इनको कहीं पे किसी से हेल्प की मांगने की जरूरत ना पड़े, या जो टॉर्चर एंड जो डिप्रेशन एंड व्हाटएवर थिंग्स दे आर स्ट्रगलिंग विद, वो उनकी कुछ हद तक कम हो जाए। दिस इज व्हाट इज ट्राइंग टू डू नाउ। I think over here, school can also play a very important role because in a lot of schools, ये openly नहीं सिखाया जाता है बच्चों को कि ये okay है। Like आप social media पे तो देख लेते हो, but स्कूल में आपको वही knowledge देते हैं कि ये गलत है, वो गलत है। स्कूल के बारे में मैं आपको बताती हूँ। So I have my friend Fedha and उसका बेटा exactly 2 years before, same February 22nd या 24th को, he committed suicide from 11th floor. Oh. He was also struggling with his identity initially, और धीरे धीरे उसको डिप्रेशन में गया। उसकी सारी मेडिकेशन शुरू की, साइकियाट्रिस्ट को दिखाना शुरू किया, तो थोड़ा सा ठीक होना शुरू हुआ। बट no, the college authorities, school authorities were not ready to take action against the children who were bullying him. बहुत बुलिंग थी, बहुत हैरेसमेंट थी, उसको वॉशरूम में जाके उसको बहुत हैरेस करते थे। एक ऐसी स्टेज आई कि वो लड़का 11th फ्लोर से जंप मार गया। एंड नाउ स्ट्रगलिंग विद स्कूल अथॉरिटीज, कितने केसेस फाइल कर चुकी है उसके अगेंस्ट में, दे डिड नॉट टेक एक्शन, सो दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट एंड स्कूल इज नॉट टेकिंग एनी रिस्पॉन्सिबिलिटी। Actually, that is a very big problem in today's time that when I was in college, my parents were asked to sign this anti-ragging affidavit कि अगर आपके बच्चे ने ड्रैगिंग करी तो आपको यू विल बी रिस्पॉन्सिबल, फाइन लगेगा, ये वो काफी फॉर्म्स आ गए थे गवर्नमेंट की तरफ से। पर ये अभी सिर्फ फॉर्म तक ही रह गया। वो हम बोलते हैं कि बुलिंग नहीं होगा, रैगिंग नहीं होगा, क्योंकि अभी I think just few months ago there was a case that this 10th standard boy who used to post on Instagram wearing saris and I think that was his name. He also committed suicide because of cyberbullying. Yeah. And when I was reading that article and I was having a conversation with my colleagues at that time when I was interning, our only question was, how do you stop this? Because cyberbullying is like huge in number. कितने लोग कहाँ से क्या बोल रहे हैं, आपका कोई रिकॉर्ड ही नहीं रख सकते आप उस चीज का, और कोई कंट्रोल भी नहीं कर सकता। तुम कितने कॉलेज में कितनी जगह लगा दोगे पुलिस को, कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन में कितना कर लेगा ये, तो जब तक कि हमारे अंदर में हमारा मन बदल नहीं जाएगा, हम लोग खुद नहीं समझेंगे, तब तक ये चलता रहेगा। And your parents need to be educated, I think, because whoever is bullying, उनको भी उनके घर से I think they are also not receiving the proper information, proper education, because your primary source of education is your home. Your the primary source of socialization is also home. मम्मी पापा cousins यही आपको basic सिखाते हैं कि आपको कैसे behave करना है। And if the attitude is कि अरे like I know somebody who is a little effeminate in their behavior, but he's not gay or bisexual, he's straight, but he's a little feminine in the way he talks, the way he moves, which is again abnormal for a lot of people. And the immediate जो एक स्लैंग के तरीके से आप लोगों के उसमें सुनने को मिलता है कि अरे ये लड़की जैसा है, या why are his parents not saying, but that's normal. But when it comes to family, I think that is where वो जैसा आप कह रहे थे ना कि फैमिली मेंबर्स क्या बोलेंगे, क्या सोचेंगे, इस थॉट प्रोसेस से बाहर ही हम नहीं निकल पाते हैं। एंड व्हेन आई सी channels on Instagram, on YouTube, where people are talking about it, I feel this is a very great platform for empowerment. True. And
Because when, let's say, somebody of my mom's age or somebody of our parents' age, when they will see you transforming your life in such a beautiful format, they will also think, this person must have कुछ तो इनको लॉजिक लगा होगा इसके पीछे कि जिस दिन शार्क टैंक आया था, जिस दिन शार्क टैंक रिले हुआ था, it was 30th of January last year. एकदम चल रहा है वो फ्लो में, सबके घर में सोनी टीवी चल रहा है, शार्क टैंक आया, इट वाज नॉट नोन कि नेक्स्ट एपिसोड किसका होगा, एंड ऑल ऑफ अ सडन LGBTQ parent, mother publicly speaking that I did so and so. We were flooded with messages. ओ आंटी मेरी मम्मी ने देखा एंड मेरी मम्मी ने रोना शुरू कर दिया. एटलीस्ट वी स्टार्टेड कॉन्वर्सेशन. एटलीस्ट वहां से लोगों को रियलाइजेशन हुआ कि अच्छा ऐसा भी हो सकता है. देखो मतलब इट बिकेम एन एग्जाम्पल फॉर अदर पेरेंट्स ऑल्सो कि सी व्हेन मदर वन सिंगल मदर कैन डू, व्हाई नॉट यू? व्हाई इज देयर so much of hesitation? Why is there so much of stress? A lot of times parents feel that our children are too young to decide whether you are gay or lesbians. Like I without mentioning very detail about the cases, but in Western world this has become a huge problem in today's time, where even underaged children who are getting influenced from social media, they have started taking, let's say medicines, they started taking testosterone shots and everything, and after a point they regret. Oh, ये सब 18 से पहले ही हो जाता है. मतलब काफी fast forward community है वो. And the experts are saying that the knowledge is like so spreading rapidly that the problem is now how do you control it in a way that it is productive, it is positive, but at the same time it is not harmful. Because before 18, let's say 18, 19, till the person becomes a little mature, वो decision making power नहीं आ पाती है. वो नादानी में भी कभी influence होके कभी आप गलत decision ले सकते हो. So I think in India, like you're saying, you've spoken to parents and you are at least in touch with people who are maybe underaged also, who are feeling this way. What would be your suggestion for the parents that how do you manage the child's let's say eagerness and the urgency to come out, but at the same time you have to also be responsible with it so that you don't regret your decision? So I think these conversations should start right from the childhood. So even if the child is say about in class 2, class 3, at home also the parents have to take a very soft conversations. I remember my son was telling me कि एक 6-7 साल की लड़की थी. She was talking to her mother and she said कि मम्मा अगर मैं आपको किसी दिन बोलूं कि मैं lesbian हूँ तो how would you react? And mom was surprised कि इसको कैसे पता है. And then उसने explain किया, and then mother daughter they had long conversations. So it becomes very easy for a young child to adapt these things. जब बच्चे बड़े हो जाते हैं it becomes very difficult. Bullying शुरू हो जाएगी. Even for those who are उनको bullying करना, good touch bad touch तो आजकल हम वैसे ही सिखा रहे हैं. इसी तरीके से उनको ये भी सिखाना है हमको कि bullying करना है सबसे बुरी बात है, और बुलिंग देखते हुए चुप रहना उससे भी बुरी बात है. तो ये जो एजुकेशन है ये पेरेंट्स को घर से ही देनी शुरू करनी चाहिए. टीचर्स तो करती हैं, टीचर्स का कंट्रीब्यूशन तो ज्यादा है, बट एटलीस्ट इट शुड स्टार्ट फ्रॉम योर होम. तो जब तक कि वो अवेयरनेस बच्चों के अंदर में बचपन से ही नहीं आ जाएगी तो ये हमारी चीजें बढ़ती रहेंगी. सो यू हैव टू सी कंटेंट, यू हैव टू सी मूवीज, यू हैव टू सी लॉट ऑफ जितने टीवीज में कितने सीरीज आ रही हैं, कितनी मूवीज आ रही है, बच्चों के साथ देखो. क्योंकि बच्चों के अगर थोड़ी सी भी एंजाइटी है, सपोज एक बच्चे को पता है कि मैं गे हूँ, सपोज मम्मी बैठी हुई है, तो मम्मी को अप्रोच कैसे करना, फर्स्ट कॉन्वर्सेशन कैसे स्टार्ट करना. मूवीज से मूवी चल रही है, मम्मा आपका क्या आइडिया है, हाउ डू यू थिंक. सो देन देयर कैन बी सम रिएक्शंस. फ्रॉम दोज रिएक्शंस यू विल कम टू नो where is she,
एट द प्रेजेंट मोमेंट, कि वो कहाँ पे है, किस स्टेज में है, एक्सेप्टेबिलिटी है, हाँ बेटा ठीक ही है, यू नो, इट कैन बी दिस रिएक्शन कैन बी, हाँ ये सब तो बाहर बाहर की चीजों में होता है, ये सब यहाँ नहीं होता, India पता में नहीं नहीं क्या होता। दिखाते रहते हैं ये सब चीजें, दिस कैन बी अनदर रिएक्शन. सो उस लेवल के बेसिस पे देन यू हैव टू स्टार्ट कॉन्वर्सेशंस. फिर तुम्हें अगर डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन यू हैव टू ब्रिंग योर फ्रेंड्स, थोड़ा फ्रेंड्स के साथ में मिले, जैसे मैंने अपने बेटे के साथ, मैं अपने बेटे के फ्रेंड्स को मिलके आई थी, बिकॉज मुझे लगता था कि ये गे है और ये पता नहीं क्या करता होगा, खूब दारू पीता होगा, खूब पैसे वेस्ट करता होगा, ये सब दिमाग में अपने मिसकंसेप्शंस बना के रखे थे. तो उसने मुझे क्या किया, मैं पूना गई, मैं उसके दोस्तों से मिली, फ्रेंड्स से मिली, एंड आई वॉज अमेज्ड कि इतना अच्छा इसका फ्रेंड सर्कल, इतना सपोर्ट कम्युनिटी का, जितना हम लोग नहीं कर पाते उतना हम लोगों ने उसके लिए किया. So that changed my mind. Absolutely, it was मतलब absolutely my perception changed. तो ये सब चीजें एक पेरेंट को करनी चाहिए, because that helps a parent also to understand the child. I think we have many movies started that अब तो बहुत mainstream में आ गया है. हाँ, but पहले भी मजामा थी, मजामा में माधुरी दीक्षित was playing. It was a beautiful movie. Yes. सुष्मिता सेन की आई, सुष्मिता सेन की सीरीज आई थी ताई. This kind of mainstream cinema will really help parents also. It will, because these are like, of course, no doubt, Indian community, Indian society is heavily influenced by movies. वो हीरो हीरोइन को देखकर हम काफी इंस्पायर होते हैं. And I think the first time when I saw a movie reflecting the life of a gay person was when my parents and we went to watch Kapoor and Sons. And Fawad Khan was playing the role of a gay person, and exactly जैसे expected था, रत्ना पाठक मैम was playing his mother. उनका रिएक्शन बिल्कुल वैसे ही था, मतलब उन्होंने लैपटॉप ऐसे, आई थिंक शी वाज लाइक सो एंग्री एंड लाइक थप्पड़ वप्पड़ मार के गलत है, ये है वो है. शी स्टॉप स्पीकिंग टू हिम ऑल टुगेदर. फ्रॉम बीइंग हिज फेवरेट चाइल्ड ही जस्ट बिकेम दिस पर्सन शी डजंट वांट टू इंटरैक्ट. बट धीरे धीरे एंड में उन्होंने दिखाया कि नहीं, शी टुक सम एफर्ट टू अंडरस्टैंड, टॉक, व्हाटएवर. एंड फ्रॉम देयर it also became a point of I would say conversation starter in my family, and from there onwards I started saying that acha theek hai, this is something I need to constantly talk to my parents about and educate them, क्योंकि उनको भी नहीं है इतना idea इस field के बारे में. And then of course we had Made in Heaven, the brilliant Prime, Amazon Prime show, and that was also the show which inspired me to write my paper. And I feel that in today's time, this is something people say that it's a nuisance, but it's not a nuisance. This is not a new concept. जैसे बोलते हैं ना, ये अभी आजकल नया आ गया है, ये नया नहीं है, ये बहुत पुराना है, ये बहुत पहले से ही है, ये बहुत सालों का है. बस पहले लोग बोल नहीं पाते थे, वो प्रेशर इतना था, वो उनको अपॉर्चुनिटी नहीं मिली, उनको वो स्पेस नहीं मिला, वो वैसे ही चले गए. बट नाउ it's actually such a great thing that people don't have to like succumb to that feeling and just live like that, because so many people, so many case studies we have read where people get married और शादी के कितने साल बाद उनके पार्टनर्स को पता चलता है कि वो गे है, वो लेस्बियन है, वो जबरदस्ती फैमिली ने प्रेशर में शादी करा दी थी. बट एंड देन दैट पर्सन इज ब्लेम्ड, आपने बिट्रे किया है. बट वो दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू नहीं समझता कोई कि like what that person must be feeling. Before we wrap up the conversation, I would like to ask you personally, where do you see the community going from this, let's say from today, where is this whole movement going? Because we had Pride parades before also. I have also been a part of some parades, and it is, I would say, the conversation has begun. वो foundation बन गया है. अब इसके बाद क्या? How do you go ahead from here? I think काफी कुछ इवॉल्व हो रहा है. जैसे सुप्रीम कोर्ट में सेम सेक्स मैरिजेस पहुंच गया. हाँ जी. किसी ने सोचा नहीं था, हालांकि वो रिजेक्ट हुआ
बट एटलीस्ट उस लेवल तक तो पहुंचा. सो बट धीरे धीरे टाइम विल टेक. बट जैसे सती को भी रिमूव होने में कितने साल लग गए थे. इट वॉज नॉट अ वन डे मूवमेंट, यू नो. बट ये डेफिनेटली मेन स्ट्रीम में आ जाएगा. अनदर 5 years आई थिंक it should be all equality will be there, and like Western countries, India will be uh, I think at par with any other countries. So you say, would it be safe to say this is a reform that is happening in It the is a country? social reform, definitely. Thank you so much, ma'am, for joining in today's conversation. Thank I really hope that everyone who's watching us today gets inspired by you and also goes and supports ma'am's community and channel on Instagram. So thank you so much for coming. It was a great, great pleasure talking to you. Thank you for calling me and taking this topic on your channel. Thank you so much. For more such discussions, do click the subscribe button and we'll see you in the next one.